Very good morning, students. Now we understand the difference between census and sample method, right? Students, it is obvious that when whole population is taken in into account, data collection is called census method. जब हम पूरी पॉपुलेशन और यूनिवर्स की इंक्वायरी करते हैं तो उसको सेंसस मेथड बोला जाता है, राइट? And where when small group that is representative of the entire populations is used, it is called sample method. और जब हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से कुछ ग्रुप की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है सैम्पल मेथड, राइट? सपोज दैट इन योर क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स. When we inquire all the 50 students, that is called the census method. But when we study only some students or 5 or 10 students out of 50 students, that is called the sample method, right? जब हम जो है 50 में से 50 बच्चों की स्टडी इंक्वायरी करते हैं उनके बारे में तो उसको बोला जाता है सेंसस मेथड. और जब 50 में से हम कुछ बच्चे 10-10 के ग्रुप में या 5-5 के ग्रुप में एक एक बच्चा लेते हैं उसको दैट इज कॉल्ड सैम्पल मेथड, राइट? सेंसस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. यूनिवर्सल नंबर ऑफ द आइटम आर वेरी लार्ज एंड आल्सो एक्सपेंसिव बिकॉज वी नीड मैनी investigator for the inquiries where sampling is quick and inexpensive. सैम्पल क्या होता है? जल्दी होता है और इनएक्सपेंसिव, कम खर्चीला होता है, राइट? नाउ वी अंडरस्टैंड some basic different scope. All items related to with the problems are analyzed, right? Only a small group items is chosen from large group, that is sample method. Cost, it is require more money. कौन? census method is require more money, time and energy. But sample method it require less time and energy. It is more economic, right? Accuracy and reliability. Census method is more accurate and reliable as all the items of universe are studies, right? And sample method is less accurate and reliable. Organizations, census method it needs more organization skills, right? And a large force of enumerators means the enumerator who study or collect the informations from the informant, right? And sample method it needs less organization skills and less number of enumerators, right? And fifth is deep study. The census method, the deep study of the subject is possible in census method because we study all the items of universe, right? And in sample method deep study of the subject is not possible, right? Stability, the method is suitable, or suitability means the method is suitable when more accuracy is required and area of inquiry is limited. तो जब हमारे पास एरिया कम होता है और एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी तब हम सेंसस मेथड का यूज़ करेंगे, राइट? और जब हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं, ठीक है, और वाइड बहुत बड़ा एरिया है, देन वी यूज़ द सैम्पल मेथड, राइट? तो you can understand the difference between the census method and sample method. Thanks for watching this video. Like and subscribe the video. Have a great day ahead.